हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनजीओज़ इन यूपी। तो एनजीओज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये ऑप्शनल पेपर 5 से रिलेटेड है। तो हम कोशिश करेंगे कि मेंस से पहले ये सब कंप्लीट हो जाए ताकि रिवाइज़ करने का भी टाइम मिल जाए। और थोड़ा अगर इन लेक्चर से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड लेट मी नो if any improvements, any feedback, any criticism, everything is allowed. Okay, so let's get started. Here it is given that World Bank, according to World Bank, what is NGO? NGO is not for profit organization to pursue activities. Why? What kind of activities? To relieve what kind of relief? That is suffering, and promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social services, and undertake community development. Okay, so you can use this definition as it is, or you can use your own definition. Okay, these organizations are not, because they are not part of the government and have a legal status and register under Societies Registration Act 1960 of the government. Term NGO is very wide. It is a spectrum kind of a thing, and sometimes it is non-governmental, quasi-governmental, or semi-governmental, voluntary, non-voluntary, etc. Okay, then why we need NGOs? Okay, so before independence or since independence, India has achieved phenomenal economic growth in education. I'm sorry, before independence our economic growth was very poor because of British Raj and the exploitation of drain of wealth. But since independence, India has achieved phenomenal growth, and in education, healthcare, poverty, and the elevation and overall standard of living of people. But issues of women, children, and marginalized section like transgenders, elders, and the SCs, STs. However, these challenges remain the same in our India. So, the adverse consequences of inequitable growth include the spread of Naxalism, recurrent violence, and farmer suicide, radicalization. So, these challenges remain same, or they are not reducing as per the demand of today's time. So in such environments, civil societies play a key role in raising the concern of people and ensuring that minorities are not neglected. And the state required the constructive and collaborative engagement of the civil society in its various development activities and programs. So, NGO act as the operational arm of the civil society and thus have an important role in the development process. So, it is registered under FCRA 2010 legislation regarding the NGOs, FEMA. Okay. So we have Article 19 Clause 1 Clause C, which is provide the legislation relating to cooperative societies. And we have also the DPSP of under Article 43, and it is under concurrent list in entry 28. So what is the contribution or role of NGOs in UP? I'm not reading this thing line by line because I have already read that, and I'm just gonna give you the overview and the quick points that you can write in your answer quickly. Okay, so what are the positives of NGOs, or you can take it as the role of NGO or the contribution of NGO. ठीक है, सोशल इश्यूज, रिगार्डिंग सोशल इश्यूज, तो बेसिकली एनजीओज क्या करते हैं? अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम चलाते हैं। उनका टारगेट यही होता है, दे टारगेटेड ऑन द पॉलिसी मेकिंग, द अवेयरनेस जनरेशन, and to increase focus on bringing positive changes, making a better society, like NICE Foundation on LGBTQ rights. Also, the government NGO can as extended arm of government, and they reduce the burden on public institution. Also, better implementation of scheme like midday meal scheme. They went school to school to promote the scheme of the government, and they raise awareness. Okay. Also,
Also wait a minute. Okay, improving the government performance. NGO can broaden government's accountability, ensuring government is responsive to citizens at large rather to narrow sectarian interest. And it increase flexibility in policy making by bringing their own independent expertise and research team, because NGO is mix up of various kinds of people, various researcher from various fields. So it helps in induce innovation and flexibility. They also improve monitoring and evaluation as CAG and social audit by NGOs while preparing its report. And okay, service role as act as a flexible mechanism through which people concerned about a social or economic problem can begin to respond. It also caters the group of the people who desire a range of public good that exceed that government or society is willing to support. Okay, so basically it acts as a intermediaries or a mediator between the government and the local public, to tell them that government or society is willing to support. Building community participation, because the most importantly the capacity to conduct a meaningful dialogue with communities. Sometimes the local NGOs can communicate better with the local public because there is less chance of miscommunication or the language barrier, so they communicate really fluently. Also, they foster pluralism, diversity, and freedom. Many NGO work to preserve and promote India's diverse culture. So here is the quick overview of the need for NGOs, because they representative of poor. Also, they improve the service delivery, crisis management, female management, self-organization, provide two-way communication. So what are the activities undertaken by NGOs? So what kind of work they do? Advocacy, analysis, awareness raising. See, you need to remember these keywords and use it in your answer. Brokerage, conflict resolution, capacity building, delivery of service, evaluation and monitoring. So if the question comes only narrow down to the NGOs in UP, which is the most chances are, so let's get into it. Over dependence for funds. They majorly remain dependent on government and external funds. It affects the abilities of NGO to speak out against the government. Okay, so these are the issues. First, I tell you the issues in a broad spectrum, then we will get into it. So more than 30 lakhs NGO are not interconnected. Okay, so what are the disadvantages of in not connected with each other? So sometimes most of the NGOs lack resources. They also lack research expertise, funds, and most of the things. So if they are not connected to each other, most of the time they lack resources and fail to perform their own purpose. Also, they are only restricted to majorly in urban areas. You find very less, I mean sometimes it is zero uh, in urban areas, in rural areas. Okay, so they are restricted only in majorly in urban areas. Also reduce access to public, I mean no optimum utilization of resources. Okay, very few people use NGO for their work, for their protest and things like that. And next is irregularities in functioning, like Pratham's financial problem. Also, they eroding public trust, and it also reduce transparency. Means most of the NGOs found to be used by the foreign aid countries like China and Pakistan. Most of the NGO use the funding to radicalize the people and and in terror financing. Okay, so these are the major issues with NGOs. Now, as restricted to UP, we will read now. NGO have been accused of acting as a cover for organized crime in past. Okay, yes, the word I was searching for is organized crime. Okay,
and as being fronts for fundamentalist cause. Foreign funded NGOs have been responsible for organizing allegation, agitations, and sculpting development projects in India. Okay, that's why it lead to eroding public trust and reducing the transparency. Also, NGOs are often seen as encroaching on centuries old tradition and culture of the people and lead to mass protest attempts sometimes. Like ban on Jallikattu. Jallikattu is a practice in which the bull race is used to happen. It is a local festival of the Tamil Nadu, I guess. Yeah, Tamil Nadu. After the PIL by PETA is one such example. You can use this example, okay? Accreditation remain a big challenge. It is very difficult to distinguish whether an organization want to work for the cause of the society or has been set up only for the purpose of receiving government grants. Sometimes the NGO, for the sake of for the name of NGO, they are just using the government funds. Okay, money laundering. NGOs may serve as conduits for money laundering because there are lack of transparency of getting funds from here and there, so they are just used for the money laundering. Power asymmetry. So some NGOs have acquired character of MNCs because of large scale funding from foreign governments, companies, and centralization in urban and metropolitan area, lack of volunteerism. Sometimes they lack of staff, poor governance and networking, political activism. Sometimes they used by the political parties to promote their own agenda in the ground level public. Acting as conduits for the black money. Okay, black money, money laundering, same. ठीक है. Okay, so what are the impact of NGOs? So impact, here is the positive side and there is the negative side. So what are the positive side? The rural development, how it contribute to rural development. Most of the government scheme that people are unaware of, NGO used by the government to aware people, like मनरेगा बहुत ही कम लोग यूज़ करते थे, बट आफ्टर द NGO वॉलंटियर अवेयर पीपल, सो दे स्टार्टेड यूजिंग इट मोर. एंड मिड डे मील स्कीम भी इन्होंने प्रमोट सबसे ज़्यादा करवाया था NGO वालों ने. ओके, विमेन एम्पावरमेंट. हम कई बार देखते हैं कि कुछ जो विमेन जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता या जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, तो NGOs के वर्कर उनकी हेल्प करते हैं कि आप जाइए, आप आइए हमारे पास, हम आपको एक लॉयर भी देंगे, हम आपके लिए फ़ाइट करेंगे. हम पुलिस के पास क्योंकि उनकी पुलिस में भी काफ़ी जानकारी होती है NGO वालों की, तो वो पुलिस में भी जाते हैं, वो कोर्ट में भी जाते हैं, पूरी सहायता करते हैं और पूरी फ़ीस सब कुछ फ़ंड करते हैं. ठीक है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट. आपने देखा होगा कि कुछ रील्स वगैरह में जैसे कि कुछ NGOs होते हैं, वो बच्चों को कॉपी किताब बांटते हैं, उनको स्टेशनरी का सामान देते हैं. हेल्थ के केस में वो प्रॉपर केयर देखते हैं बच्चों की, जैसे कि अक्षय पात्र हो गया, तो उसका मोटिव यही है कि टू प्रिवेंट हंगर, ओके, अमंग द पीपल. फाइनेंशियल हेल्प टू नीडी, केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल. हम देखते हैं कि कई बार ओल्ड एज पीपल सड़कों पे पड़े होते हैं बहुत ही बुरी हालत में. ठीक है, तो उनको ये लोग किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देते हैं, या फिर कोई जो वनरेबल्स वंस हैं, जो बिल्कुल उनका फ़ायदा उठा सकता है कोई भी, उनको भी ये लोग रिहेबिलिटेट करते हैं. फाइटिंग टुवर्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ सोसाइटी. ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ सोसाइटी से क्या है कि कुछ NGOs जो होते हैं, जैसे कि गूंज हो गया, या फिर हल्ला बोल, पिंजरा तोड़, ये कुछ NGOs हैं, या है ना, तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट पे कि लड़कियां, जैसे कि रेप के केसेस होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि विक्टिम को ही शेम किया जाता है कि इसकी गलती थी, ये छोटे कपड़े पहन के गई थी, या फिर ये ऐसे क्यों गई थी, ये वैसे क्यों गई थी, तो उसमें विक्टिम की गलती बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो व्हाट इज़ दिस इज़ द ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ सोसाइटी. तो people, I mean the volunteers, they fight against the orthodox mindset. Agriculture development. ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स लोगों को नहीं पता होता स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान या फिर मुद्रा योजना हो गया.
ठीक है, जिसमें वो लोन वगैरह ले सकते हैं, और जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, या फिर जो इंश्योरेंस होता है क्रॉप्स का, या फिर जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है, नमस्ते स्कीम वगैरह हो गया, तो इसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, ठीक है, जैसे सोशल ऑडिट ये खुद ही कर लेते हैं, कई बार बहुत सारे फाउंडेशन जो है अपनी रिपोर्ट खुद ही निकालते हैं। उसके बाद व्हाट आर द नेगेटिव साइड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ NGOs, हर्डल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि हमने देखा था कुंडलकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट था, उसके टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी रोक लगा दी थी कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहाँ का पूरा बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो जाएगा, लोगों का मुश्किल हो जाएगा रहना, रेडिएशन होंगी तो काफ़ी नुकसान होगा बायोडाइवर्सिटी को भी प्लस पीपल को, ऑल्सो द ग्राउंड वाटर गॉट पोल्यूटेड। तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने सुना था, तो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ हर्डल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, and it is lead to the lack of infrastructure in our country. Not following rules and regulation of countries, mouthpiece of funding organization, कि जहाँ से ज़्यादा फंडिंग मिलती है ये उसी के साइड से बोलते हैं, इसका मतलब ये है। Little or no government control, but now the government has came up with some laws. Okay, less respect toward local custom and environmental values, as we see in generally Kattu case, money laundering, political corruption. So what are the famous NGOs that are working in UP? Okay, this is a very important part. You can write most of the NGOs name in most of the in most of the subheadings, okay, under the subheadings. Okay, so what are the name of famous NGO? Food for Life Vrindavan since 1991 work include, तो ये किसके लिए, as the name suggests, free food distribution, cleaning, plantation, paper recycling, organic farming, sewing, हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये HIV प्रिवेंशन कंट्रोल, प्राइमरी हेल्थ केयर। दृष्टि फाउंडेशन, तो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता ये उनको हेल्प करते हैं। ओके, फार्मर फैमिलीज एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इंश्योर सर्विस एंड लाइवलीहुड विद इन द टाउन, कि उनके यहाँ पे ही मिल जाए। ओके, आई थॉट इट वॉज दैट दृष्टि फाउंडेशन, जो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था ना, तो उनको ये कुछ इक्विपमेंट देते थे एंड उनको ब्रेल की सहायता से उनको एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। ओके, तो ये उसके लिए है कि फार्मर्स को बाहर ना जाना पड़े, माइग्रेशन रेट कम हो जाए। उसके बाद जन विकास समिति, इट एक्टिवली वर्किंग इन एंड अराउंड वाराणसी में ही है ये, एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग इट्स एरिया। ये एज ओल्ड प्रॉब्लम जो गरीब लोगों को फेस होती है उसके लिए काम करते हैं। ज्योति बाल विकास संस्था, तो ये कानपुर में है और ये चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। कुटुंब स्वमज्योतन इवाम पुनर्वास संस्था, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी विद्या एंड चाइल्ड। ओके, हियर आर फ्यू नेम्स, हेल्प एज इंडिया, गूंज, प्रथम, अक्षयपात, स्माइल फाउंडेशन, नन्ही कली, कोर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ सम्मान फाउंडेशन। ओके, तो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड दैट NGO नीड टू वर्क अपॉन? तो नेशनल क्रेडिशन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ एक्यूमिडेशन एक्टिविटी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, तो उन्होंने ये बोला है कि एंश्योर कंप्लाइंस बाय NGO, शुड बी मेड टू एंश्योर कंप्लाइंस बाय NGO, ठीक है। देयर शुड बी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA और इनके बीच, NGOs के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए टू प्रमोट मोर फाइनेंस बट विथ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग इलिसिट एंड अनअकाउंटेड फंड, कि जिनका पता ही नहीं है कि वो फंड कहाँ से आया है, ठीक है, या फिर वो जो फंड है वो किसी इलीगल काम के लिए यूज़ ना हो। A regulatory mechanism to keep a watch on the financial activities by NGO and voluntary organization is the need of the hour, कि उनको कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, या फिर उन पर कैप लग जाए कि वो इससे ज़्यादा फंडिंग अगर ले रहे हैं तो दे शुड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफिसर।
citizens today are keen to play an active role, and the citizen also need to be aware कि अगर वो अपना पैसा NGO में दे रहे हैं, या फिर वो जिस NGO की हेल्प ले रहे हैं, या फिर वो अपने आसपास देखें कि उस NGO के जो वॉल्टियर्स हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं सोसाइटी को, क्या मैसेज दे रहे हैं. आर दे रेडिकलाइज देम, आर दे contributing some kind of organized crime? Okay. And should include promotion of social justice, gender equity and inclusion, etc. So this is the end of our lecture. I hope you find it useful. Thank you so much. Thank you.